So here, exercise 2.4, question number 1. In this question, what was there? Verify that number given alongside of a cubic polynomial. It is cubic polynomial and we have supposed it as px. आप अपनी मर्जी से name दे सकते हो. We have to prove that these three are the zeros of the polynomial and hence find the relationship between zeros and its coefficient in each case. अभी ये वाले इसके coefficient हैं 2. यहाँ पे इसका coefficient क्या है 1. There -5. Their constant term is 2. सबको पता होगा what are small abc. अगर क्वेश्चन में कहीं पे स्मॉल abc यूज किया हुआ है ऑलरेडी तो हम कोएफिशिएंट्स को कैपिटल में शिफ्ट कर देते हैं. क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही किया हुआ था 1/2. So for x equal to 1/2, value of the polynomial, यहाँ पे x है, there you have to substitute 1/2. So it is 2 into x cube, that is 1/8 plus x square, 1/2 square, that is 1/4 minus 5 into 1/2, 5/2 plus 2. जब आपने इनको कट किया 1/4 plus 1/4, it is 2/4. After cutting it is 1/2. 1/2 plus this number 2, it will become 2.5. 2.5 कितना होता है 5/2 minus 5/2, it will be 0. If px is 0, it means x is a 0 of px. So therefore 1/2 is a 0 of px. Similarly, we have to find for 1 and 2. Now for x equal to 1, p1 is equal to 2 into 1 cube plus 1 square minus 5 into 1 2. It will be equal to, that is p1 is equal to 2 plus 1 minus 5 plus 2. So here total answer will be, it will also become 0. 2 plus 2, 4 plus 1, 5 minus 5 is equal to 0. So therefore, x equal to 1 is also 0 of px. आपकी मर्जी है, आप इसको px भी लिख सकते हो and you can write full polynomial also. Now next is for x is equal to -2. Now p minus 2 is equal to here 2 into minus 2 cube minus 2 square minus 5 into minus 2 plus 2. So it will be minus 2 cube is minus 8 into 2 minus 16 plus 4 minus 10 minus minus here it will become plus 10 plus 2. Now here 10 plus 4 14 plus 2 16 minus 16 minus 16 plus 16 is equal to 0. So therefore minus 2 is also a 0 of px. अगर ये तीनों zeros हैं, it means we can take alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1 and gamma is equal to -2 as zeros of px. ठीक है? So half question is done. We have verified that these are the zeros of px. Next is we have to find the relation between zeros and coefficients. So for finding the relation between zeros and coefficients, we have to compare this equation with the standard form of cubic polynomial. So what is the standard form of cubic polynomial? That is ax cube plus bx square plus cx plus d. Clear? I hope it is clear up to here. If any doubt is there, you can raise the hand so that we can move further. Okay, next. Now compare px with, इससे compare करना है standard form of equation, that is ax cube plus bx square plus cx plus d. So here the value of a x cube का coefficient, that is 2.
value of b, x square का coefficient, x square can be written as 1 into x square. ठीक है, तो इसमें coefficient है that will be 1. Value of c is -5, d is 2. So now 3 zeros we are given. Let us suppose these as alpha. Let alpha is equal to 1 by 2, beta is equal to 1, and the gamma is equal to -2. Now we know the relationship between zeros and the coefficient. Sum of zeros, that is alpha plus beta plus gamma. Its value is -b over a. Clear? So first of all, find alpha plus beta plus gamma. इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 by 2 plus 1 -2. So it is 1.5. It will be 1 by 2. You can write, sorry, 1.5. It will be 3 by 2 -2. So answer is -half. अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकती हो? यहाँ पे -2 plus 1, it is -1 plus half. LCM 2 -2 plus 1. So -1 by 2. Now the value of -b over a. इसको आपने फाइंड आउट करना है. -b, here it is -1 over value of a is 2. So if you compare these two from 1 and 2, from 1 and 2, what is here? Alpha plus beta gamma is equal to -b over a. First relation is verified. Now second relation is sum of product of zeros taking 2 at a time. It was first relation. Second is, sorry, it was first relation. Second is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. अब इनकी वैल्यूज निकालिए आप. अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है? here alpha is half and beta is 1 plus 1 into -2 plus -2 into 1 by 2. So it is the sum of product of zeros taking 2 at a time. So this value is 1 by 2 -2 then -1. यहाँ पे -2 अगेन दोनों कट हो जाएंगे. आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी? -1. So it is -3 plus 1 by 2. So take LCM. -6 plus 1, that is -5 over 2. It is -5 over 2. Now find out the value of c over a. आपको सबको पता है ना कि ये रिलेशंस क्या होते हैं? We know alpha beta, ये जो है t, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, it should be equal to c over a. Now find out the value of c over a. It is equal to, here c is -5 and a it is 2. So it is -5 over 2. Now from the relation 3 and 4, from 3 and 4 we can say alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c over a. It is the second relation. Now we have to prove the last relation, that is product of zeros. Clear? I hope you are doing side by side. Product of zeros, alpha beta gamma आपको पता है values, so their product. Now third relation, alpha beta gamma. So it is 1 by 2 into 1 into -2. But करके आपके पास -1. So the total answer is -1. And we know this value should be equal to -d over a. So find out -d over a.
value of b is here 2. So minus 2 over value of a is 2. It is minus 1. कई बुक्स में बेटा यहाँ पे d over a नहीं लिखा है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है constant term divided by coefficient of x cube. तो आपकी मर्जी है, आप minus d over a लिखना चाहते हो या constant term divided by coefficient of x cube. Clear? Both the methods are equally right. So here again, let it be number 5 and let it be number 6. From 5 and 6, we can say product of zeros कितनी हो गई? Alpha beta gamma is equal to minus d over a. It is the third relation. अगर आपके पास quadratic polynomial है, then 2 relations, cubic में 3 relations और linear में 1 relation. हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Mostly videos are off. Okay, next is question number 2. Find a cubic polynomial with the sum of product of zeros taken 2 at a time and product of zeros is given to you. Clear? अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ जीरोस दिया है, s दिया है, t दिया है और p दिया है. आपको पॉलिनोमियल्स निकालने हैं. Question number 2. Cubic polynomial आपको फाइंड आउट करनी है. S, that is alpha plus beta plus gamma is equal to 2. Then t की वैल्यू आपको गिवन है alpha beta is equal to minus 7 and product of zeros alpha beta gamma minus 1. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को बेटा अगर आपके पास एमसीक्यू है और आपने डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है. यू कैन यूज x cube minus x square plus 3x minus p is equal to px. सबको याद होगा ये. If you put the values of here, इसको हम क्या बोलते हैं? s, sum of zeros. So it will be x cube minus 2x square plus p. It is the sum of product of zeros taking 2 at a time minus 7. So here plus minus minus 7x, then minus p, minus minus plus 48 आपके पास ये px की वैल्यू आनी चाहिए. क्लियर? अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ये एमसीक्यू में करना है डायरेक्ट, वैसे नहीं करना है. अदरवाइज या 1 मार्क में है या एमसीक्यू है, अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर? शुड वी स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ? So here, let the required polynomial b, उसको हमने ले लिया px के फॉर्म में. px is equal to कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d. Clear? Now you are given as sum of zeros. Let alpha comma beta comma gamma are zeros of px. ये इसकी zeros ले. You are given sum of zeros. p की वैल्यू गिवन है और p की वैल्यू गिवन है. Now we have to apply the relation. We know that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b over a. जहां से आपके पास
जाएगी माइनस बी ओवर ए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया माइनस बी ओवर ए, विच इंप्लाइज माइनस बी ओवर ए की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 होगी, दैट विल बी नंबर 1. नाउ सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका रिलेशन क्या है दैट इज c ओवर a, व्हिच इंप्लाइज c ओवर a की वैल्यू क्या होगी ये वाली, ठीक है. अब इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे c ओवर a इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -7, लेट इट बी नंबर 2. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ zeros अल्फा बीटा गामा दैट इज -14, और हियर रिलेशन क्या होगी -b ओवर a, which implies -b over a alpha beta gamma, that is -40 is equal to -40. माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है. लेट इट बी नंबर 3. अगेन हमने a की वैल्यू हम वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, वन ऑफ द वैल्यू कौन सी लेनी है इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, हियर डिनोमिनेटर 1, हियर डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है 1. सो लेट a is equal to 1. ये 1 क्या है इन तीनों का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम है. यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तीनों का एलसीएम कितना हो गया 1. जैसे हम क्वाड्रेटिक में सपोज करते थे वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में. क्लियर. आप उसको एक को अपनी मर्जी से ले सकते हो, सिंपलिसिटी के लिए हमें क्या लेना है इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम. क्लियर. सो लेट a is equal to 1. देन अब a की वैल्यू 1 डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, देन माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डाल दिया, माइनस b ओवर 1 इज इक्वल टू 2, व्हिच इंप्लाइज b इज इक्वल टू -2 फ्रॉम equation 1, from equation 1. Clear. Next is similarly we have to put a is equal to 1 in equation number 2. So c over a is equal to a की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल दी 1 -7 over 1, which implies c is equal to -7. कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी from equation 2. Similarly, we have to find the value of d. अब last equation जो है third b over a, that is d over 1 is equal to 14, which implies d is equal to 14. g की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 14. So from equation 3. Now put all these values of a, b, c and d in Px. ठीक है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास Px की वैल्यू क्या हो गई, therefore Px is equal to ax cubed. A is 1, so it will be x cubed. B is from here, it is -2, so it is -2x square plus value of c is -7x. Value of d is +14. So it is the required polynomial and it is your answer. In case of any doubt, you can raise your hands. So now question number 5. Here you are given if the polynomial Px, name of the polynomial is not given,
So I am writing let px is equal to x to the power 4 minus 6x cubed plus 16x squared minus 25x plus 10. It is the given polynomial. When it is divided by another polynomial, then let gx and the gx divisor, that is x squared minus 2x plus a, it is the divisor. Then remainder comes out to be rx की वैल्यू आपके पास क्या है x plus a. आपको क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है. You are not given here quotient. Clear? Again इसके two methods हैं. या तो आप remainder को वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, या फिर इसको सिंपली डिवाइड कर लो और रिमाइंडर को कंपेयर कर लो. क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली वी आर गोइंग टू डिवाइड दीस टू पॉलिनोमियल्स. क्लियर? शुड वी स्टार्ट दैट डिवीजन? तो मैंने क्या किया, अब ये px है जिसको हमने डिविडेंड लेना है. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय gx, योर रिमाइंडर शुड बी x plus a. क्लियर? ये जो x plus a है, अगर ये k की टर्म्स में है, वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स. क्लियर? सो स्टार्ट डिवीजन. I am going to divide it by x square minus 2x plus a, क्योंकि मुझे भी बड़ा क्यों चाहिए इसके कैलकुलेट करने के लिए. So here we are going to write here quotient. Yes. So here x is power 4, here it is x square. Clear? तो क्या करें हम? यहाँ पे x square लिखेंगे, x square. Clear? अब x square into x square will be x is power 4 minus 2x cubed plus k into x square. Don't be confused between k and other numbers. Consider it just a simple constant. Clear? अब इनके साइन चेंज करिए, ये कट हो जाएंगे. minus 6 plus 2 will be minus 4x cubed 16 minus k plus 16 minus k. दोनों का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या था? x स्क्वायर था. So it is 16x square minus kx square. 16 minus k और दोनों का कॉमन जो है वो हमने x स्क्वायर निकाल लिया. Clear? So next, here it is minus 4 and here 1. So coefficient क्या होगा? minus 4. x square को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा. इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें minus 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा minus 4x. ठीक है? तो here minus 4x into x square minus 4x cube minus 4 into minus 2, it will be plus 8. साथ में क्या होगा? x into x square plus k into minus 4, it will be minus 4 kx. अब यहाँ पे हमने x स्क्वायर तक लिखा था, तो बाकी के नंबर्स को भी हमने नीचे लिख दिया minus 25x plus 10. हमें मिस्टेक ना लगे. ठीक है? लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना होगा. चेंज द साइन. नाउ हियर minus 4 plus 4 कट हो जाएंगे. 16 minus 8 आपके पास. अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस किया. 16 minus k, इसके साथ भी x स्क्वायर है, इसके साथ भी x स्क्वायर है, इसमें से minus 8 कर दिए. 16 minus 8 8 और here minus k. So 8 minus k into x square. Clear? Next is here minus 25. So I can write here minus 25 plus 4 k into x. दोनों में कॉमन कितना है? x plus 10 as it is. Plus 10 as it is. So after that, next is here it is 8 minus k. यहाँ पे x square है, यहाँ पे x square है. So next will be 8 minus k.
8 minus k into x square, 8 minus k x square. Clear? I hope it is clear to you all. सबको समझ आ रहा होगा इसमें. If any doubt is there, you can ask. Simple है, सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा स्पेस देके करना है. Next is plus 8 minus xk into x. 2x है, यहाँ पे minus 2x है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -2 के साथ. आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 into 8. It is -16. Clear? उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2k और सबका कोएफिशिएंट क्या हो गया? x. क्लियर? सिर्फ 8 को -2 से किया -16, -k को -2 से किया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2k, नथिंग एल्स. उसके बाद k की मल्टीप्लिकेशन 8 माइनस k के साथ प्लस 8 into k, 8k minus k into k minus k square, like this. Now again subtract, ये कट हो जाएंगे. Now here -25 and here it is -16, so it will be -25 plus 4k minus minus plus 16, here -2k. साइन चेंज हो गया. सो -25 plus 16 कितना हो गया? -9. और उसके बाद 4 minus 2 2, -9 plus 2k in the bracket and then x. Here next, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट k है, इसका k स्क्वायर है, तीनों को एज इट इज लिखेंगे. तो क्या मेथड होता है? हम पावर 2 वाला पहले लिखते हैं, माइनस. अब इसमें इनके जब साइन चेंज हो, ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस में. ये माइनस है, ये किसमें हो जाएगा? प्लस में. सो इट विल बी प्लस k स्क्वायर. पावर 2 वाला मैंने पहले लिख दिया, -8k देन प्लस 10. Clear? So it is the division. Now we have to compare the remainders. आपको क्या बोला है? But remainder is x plus a. अगर remainder x plus a है, it means coefficient of x here it will be 1. ये जो -9 plus 2k है वो कितना होना चाहिए? 1. और ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a. So comparing the remainder, I hope I can remove the first 2 lines. You all have noted? Given Rx is equal to x plus a, which implies x plus a is equal to ये वाली वैल्यू -9 plus 2k into x plus k square minus 8k plus 10. आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. Now comparing the coefficient of x and constant term. What will be there? X का coefficient यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 is equal to -9 plus 2k and constant term यहाँ पे a है, a is equal to a square minus 8k plus 10. आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई. Now solve this equation. -9 will come here, it will become 10 is equal to 2k, which implies k is equal to 5. ये कट हो जाएंगे. अब ये 5 वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें डाल दो इक्वेशन में. ठीक है, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. Put k is equal to 5. That is equation number 1. Equation number 2. A is equal to 5 square minus 8 into 5 25 plus this 10 minus 40. So it will be -5. 35 minus 40. So therefore k is equal to 5 and value of a is -5. If any doubt is there, you can raise your hands.